Hello people, welcome back to my channel once again. Here we are going to do an DIY for a jewelry organizer. First we have to clean the boxes. Any box you have at your home. Clean it properly and then you have to cover it with tissue paper, or you can use magazines or newspapers as well. And you have to cut some cardboard pieces according to these shapes, and then उसको भी आपको न्यूज़पेपर से या टिश्यू पेपर से कवर अप करना है और एक बॉक्स के अंदर आपको उसको फिट करना है अकॉर्डिंग टू योर ज्वेलरी साइज। एंड देन आपको फ्रंट बॉक्स पे एक बो बनाना है, या फिर आप कोई भी और चीज़ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद आपको पेपर मैशे रेडी करनी है। पेपर मैशे आप टिश्यू पेपर से, न्यूज़पेपर से किसी से भी बना सकते हैं। आपको उस पेपर मैशे को उस बो के ऊपर पेस्ट करना है विद अ फेविकॉल, जस्ट लाइक आई एम शोइंग इन द वीडियो। पेपर मैशी को बो के ऊपर पेस्ट करने के बाद आपको उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखना पड़ेगा फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, सो दैट वो सेटल डाउन हो जाए एंड इट विल लुक लाइक दिस। So now with a newspaper or the tissue paper, whatever you are using, you have to make some creases. एक 3D टेक्सचर टाइप आपको देना है अराउंड द वो, like I am showing in the video. It will look something like this, and then you have to leave it for 5 to 10 minutes so that it dries out properly and easy to paint afterwards. So I have used white color for the base and baby pink color for the top box. You can use whichever color you like or whichever combination you like for the jewelry box. You can use varnish as well for the protection, but it's totally optional. And then you have to cover it with some transparent sheets. Also, it's an optional, not necessary to do.